एस.व मेडिकल कॉलेज कानपुर में आयोजित अपीकॉन 2025 उत्तर प्रदेश चैप्टर के 42वें वार्षिक सम्मेलन का भव्य समापन हुआ। रीडिफाइनिंग मेडिसिन फ्रॉम बेंच टू बेडसाइड एंड बियॉन्ड थीम पर आधारित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश व देशभर के प्रसिद्ध चिकित्सक और विशेषज्ञ शामिल हुए। नवीन चिकित्सा तकनीकों, अनुसंधान व रोग प्रबंधन की आधुनिक अवधारणाओं पर गहन चर्चा हुई। विभिन्न सत्रों में हृदय रोग, मधुमेह, महिला स्वास्थ्य और अन्य जटिल बीमारियों से संबंधित नवीन दिशानिर्देश प्रस्तुत किए गए। सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा में नवाचार और जन स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना रहा। पेश है सम्मेलन की कुछ झलकियां। हेलो सर, इवेंट के बारे में हमें कुछ, हमारी ऑडियंस को कुछ बताएं प्लीज़। देखिए, ये हमारा 42वां वार्षिक अधिवेशन है जो एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में मनाया जा रहा है यूपी चैप्टर के लिए, और लखनऊ ब्रांच इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही है एस.व मेडिकल कॉलेज में। इसमें देश भर से करीब 600 से ज़्यादा डॉक्टरों का इसमें प्रतिभाग हुआ है, जिसमें से जो स्पीकर्स हमारे थे, सेशंस थे, करीब 35-36 सेशंस थे जो व्याख्यान जिन्होंने दिए ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से, और इवन एम्स से आए थे, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स नागपुर और BHU लेडी हार्डिंग और KGMU, SGPGI लखनऊ, इसके साथ ही PDI चंडीगढ़, और इसके साथ ही करीब 4 उसमें हमारी वर्कशॉप्स थी जो इंसुलिन पे थी और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पे थी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पे थी, इनका आयोजन हुआ। इसके साथ ही हमारे 200 करीब रिसर्च पेपर इसमें प्रस्तुत किए गए हैं और उसके लिए हम लोगों ने अवार्ड भी दिया है। हमारा जो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पहला दिन जो इसमें था हमारा, इसका इनॉग्रेशन हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर ज्योतिर्मय पॉल के द्वारा किया गया था, और जो हमारा आज समापन है इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि श्री विनय पाठक जी, वाइस चांसलर के CSJM यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। और मैम कुछ आप भी बताएं हमारे ऑडियंस को। देखिए, इस कॉन्फ्रेंस में जो कि आप जैसा कि बताया डॉक्टर गौतम ने कि ये हमारा 42वां अधिवेशन था, और इसमें हमने मेडिसिन के सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने वो किया है। उसके हम लोगों ने टॉपिक्स रखे थे। पहला, जैसा कि हम लोगों का जब ओपनिंग वो हुआ था, तो आजकल जैसे स्नेक बाइट, सांप काटने का, तो उसका मैनेजमेंट हम लोगों ने रखा। सल्फोस पॉइजनिंग, जो ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स इसमें आते हैं जिनको कि बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उनको हम लोगों को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में व्याख्यान डॉक्टर के गुप्ता जो कि प्रोफेसर हैं BHU के, और डॉक्टर अशोक कुमार पन्नू जो कि सिर्फ उस पर सेल्फॉस पे इनका बहुत ज़्यादा कार्य है, ये PGI चंडीगढ़ से इन्होंने व्याख्यान दिया था। कार्डियोलॉजी में डॉक्टर आदित्य कपूर जो PGI के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वो, और ऋषि सेठी, इन्होंने हार्ट फेलियर और MI पे कैसे मैनेज करते हैं ये दिया। आज हमारे यहाँ पद्मश्री प्रोफेसर RK धीमन आए थे, जिन्होंने, जो डायरेक्टर हैं PGI SGPGI के, उन्होंने हेपेटाइटिस B जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी होती जा रही है, और उसका कैसे रीसेंट एडवांसेस जो है नई तकनीक से जो उनका इलाज जो किया जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान दिया। डॉक्टर अमित गोयल ने जो फैटी लिवर और जो सिरोसिस, जो लिवर ख़राब हो जाता है, उस पे कैसे हम लोगों को मैनेज करना है, उसके बारे में दिया। रूमेटोलॉजी, जो जोड़ों के दर्द के लिए, डॉक्टर विकास अग्रवाल और डॉक्टर अनुपम वाकलू ने अपना व्याख्यान दिया। 2 ओरेशन हम लोगों के हुए थे। डॉक्टर ML मित्तल जो कि डॉक्टर ब्रिजमोहन ने दिया, और एक डॉक्टर MP मेहरोत्रा ओरेशन था जो कि जिस पे व्याख्यान डॉक्टर RR सिंह ने दिया। इसी के साथ हम लोगों को हिंदी में
पहली बार हिंदी में हम लोगों ने एक PCOS जो कि अमूमन 15 से 20% महिलाओं में, यंग लड़कियों में कॉमन है, उसके ऊपर व्याख्यान डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल ने दिया। पंकज अग्रवाल थे जो गाज़ियाबाद से आए थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी डेलीगेट क्विज़ रखी हुई है, अभी चल रही है। तो डेलीगेट क्विज़ में जो हम लोगों के इतने 2 दिन के जो सेशंस थे उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कितना लोगों ने इससे ज्ञानवर्धन हुआ है। उसके ऊपर ये क्विज़ डॉक्टर अंबुज यादव जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं KGMC में, वो और डॉक्टर दीपक भागचंदानी, ये दोनों कंडक्ट करा रहे हैं। इसमें हम लोग विनर जो होगा उसको हम लोग प्राइज़ देंगे। और इसी के बाद अभी वैलिडेटरी फंक्शन होगा जिसमें कि सभी जो पेपर, पोस्टर और ये क्विज़ में एक PG क्विज़ हुई थी हमारी कल और एक आज हमारी डेलीगेट क्विज़ हो रही है, इनके विनर्स को हम लोग प्राइज़ देंगे। और प्राइज़ देने के लिए प्रोफेसर विनय पाठक आ रहे हैं और जो CGMU के वाइस चांसलर। लास्ट में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो हमारी कानपुर ब्रांच है उसको उत्तर प्रदेश में फर्स्ट प्राइज़ मिला है कल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में, हमारी ब्रांच को, कानपुर ब्रांच को। अक्सर लोग ये मानते हैं कि बूढ़ों में या ज़्यादा उम्र में रेजिस्टेंस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लेकिन रेजिस्टेंस एक्सरसाइज से इसमें ज़्यादा फायदा होता है बजाय एरोबिक एक्सरसाइज। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज क्या है? रेजिस्टेंस एक्सरसाइज मतलब कोई भारी हैवी चीज उठाते नहीं नंबर, इससे क्या होता है मसल मास बढ़ता है। तो सार्कोपीनिया का इलाज एरोबिक है, बैलेंस एक्सरसाइज है, लेकिन उससे बड़ा इलाज है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। बुजुर्गों को भी करनी चाहिए, किसी भी उम्र में आप एक्सरसाइज करते हैं फायदा होता है। जैसे बुजुर्गों में कर सकते हैं बुजुर्ग, लेकिन डंबल नहीं उठाना, नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बस एक चीज़ है कि जो आदमी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है उसको ग्रेडेड धीरे धीरे शुरुआत करें, डॉक्टर के सुपरविजन में धीरे धीरे 5 मिनट से शुरू करें, 6 मिनट 8 मिनट करते करते 30 से 45 मिनट पर डे ले जाए। ये कोई भी एक्सरसाइज ये महिलाओं में ज़्यादा दिख रहा है कि पुरुषों में? सार्कोपीनिया दोनों। सर अपन यंग लोगों में जैसे बुजुर्ग लोग चलते हैं झुक के, ऐसे टाइप यंग लोगों में भी ये समस्या है, ये भी सार्कोपीनिया कि झुक के चलने तो कमर की बीमारी हो सकती है और चीज़। डॉक्टर साहब आपने सार्कोपीनिया का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि अगर एक आदमी ये कहता है सार्कोपीनिया फैटिक का कि चलने फिरने में उसको थकान ज़्यादा होती है, एक सीढ़ी या एक फ्लोर जो चलने कमजोरी लगने लगती है, उसकी हैंड ग्रिप कमजोर है, तो ये सब कुछ लक्षण इससे पता चल जाता है। डॉक्टर साहब आपने रोकने के 3 लक्षण तीन चीज़ बताई। पहला व्यायाम, पहला सबसे इंपॉर्टेंट व्यायाम, उसके साथ प्लस डाइट। डाइट में खास चीज़ है प्रोटीन, गुड क्वालिटी प्रोटीन। प्रोटीन में कौन सा? गुड क्वालिटी प्रोटीन जो भी सोर्स हो, आप मतलब चाहे शाकाहारी हैं आप तो दही, दूध, पनीर, सोया, राजमा, ये प्रोटीन का सोर्स है। मांसाहारी आप हैं तो अंडा बेस्ट प्रोटीन, चिकन, फिश, विटामिन डी का। हाँ, विटामिन डी की बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी है। मैं समझता हूँ कि बुजुर्गों में खास करके विटामिन डी का जांच करानी चाहिए। अगर विटामिन डी आपका 30 से कम है, 30 IU पर से कम है, तो उसको विटामिन डी लेकर के आप उसको पूरा करें। उसके 30 IU जो ml पर ml होता है ना, उसकी जो जांच होती है, अगर 30 IU से कम है तो आपको फाल का, फ्रैक्चर का, डेथ का खतरा ज़्यादा है। सार्कोपीनिया का खतरा ज़्यादा है, नहीं उसका भी खतरा है, फाल का, गिरने का, फ्रैक्चर का। हाँ, फ्रेटी, वेरी गुड। फाल का, फ्रेटी का, फ्रैक्चर का और डेथ का भी उनको देखा गया इनके शरीर विटामिन 30 IU से कम विटामिन डी, तो ये बीमारियों का खतरा ज्यादा है। फाल का, फ्रेटी का, सार्कोपीनिया का, फ्रैक्चर का खतरा। नमाज को किस श्रेणी में रखेंगे? नमाज को वज्रासन, एरोबिक एक्सरसाइज ये इसमें फायदेमंद है, बिल्कुल फायदेमंद। जिस तरह से आप योगा करते हैं, वज्रासन, नमाज, योगा हो चाहे नमाज, में दो फायदे दो हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और फ्लेक्सिबल बॉडी हेल्दी बॉडी होती है। दूसरा फायदा है कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई पैसा नहीं खर्चा होना, आपको जिम में नहीं जाना है, ठीक। और तीसरा फायदा ये है कि ये फिजिकल उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग करती है, जिसका रोल है
History taking is not an interrogation that people think, it's a storytelling. Physical examination is not a ritual, it's a revelation. Each question asked, each hand laid on the patient is a step towards dignity and truth. Reviving these skills is the first resuscitation we must perform. One thoughtful test chosen after reasoning is worth more than the battery ordered in panic. Medicine does not demand everything everywhere all at once. It demands precision. Minimalism is not neglect, it is wisdom sharpened to find it. And finally, to the take-home message. Now, if you remember our organization UPAPI, you will never forget this. And the crux of my talk is conveyed to all of you. You understand by palpation. If you don't touch, you don't know. Bedside first. P. Prioritize the patient. Patient over paper metrics. Compassion over computation. A. Thank you so much for the wonderful talk. Now I would like to invite on stage Dr. Upapicon. Why it fails? It fails because we do not keep a balance between food intake and not looking and not eating. So, food intake and physical activity should be. On behalf of Dynamic Organizing Committee of Upapicon 2025 Kanpur branch, I extend my warm and heartfelt welcome to each one of you to this grand inaugural ceremony of forge new collaboration and reaffirm our shared mission to serve humanity through science, empathy, and innovation. The future of medicine lies not in the tools we use, but in the purpose that guide us. With these thoughts, I welcome you all once again to Upapicon 2025, and may this conference inspire us to redefine medicine from bench to bedside and far beyond. Thank you. This conference will be a memorable experience for all of us. Once again, I welcome you all to 42nd Annual Conference. Let us make most of this opportunity to learn, grow, and contribute to medicine. Thank you all for your patience. Thank you so much, sir. And now it's the time for release of souvenir, beautifully crafted by editor Dr. R.K. Verma. I would request him to kindly
present a souvenir to chief guest and to all distinguished guests at the dais, and I would request all the guests to kindly release the souvenir and do the honors. The members in the conference hall, at the very outset, I must thank all of you to invite me to share some views with you all. I am very pleased that I have been called. I find myself that a teacher is committed to teach, wherein a student is to learn. A teacher not only teaches but provides jnana, wisdom in him. You may ask, what is jnana or wisdom? Jnana or wisdom is provided by a teacher who churns the subject for years and years. Then it is very easy to understand and it is very easy to grasp and it is permanent. Now, if you are in confusion, do a thyroid scan. Not everywhere you have to do. Now, why it is important, sometimes you find a patient has got a normal, no eye signs and the patient has... Pleasure as well as honor to be here amongst my seniors, my teachers, my colleagues, and it's really a very nice platform to be. Sir, close. Yes, ma'am. Lower corner of the finger. This is what happens with the multiple usage of the times, and many times patient will come that one pen is utilized with one single needle. So you can very well imagine what problem would have occurred in the skin of that patient. So you can also very well judge when you use the single razor for multiple times what happens to your face. So definitely you don't ask patients to use more than 4 times. This is just to save some money. I would like to invite the chairpersons, Dr. A.K. Singh and Professor R.T. Lalchandani ma'am on stage, please. So when we see this slide, this is the first slide which shows circadian rhythm, yoga, meditation and the disease. So when there is a spring, so that is the spring of life. Yes, sir. चलता रहेगा मैकेनिज्म। कब इसको दोनों अलग-अलग डिवाइसेस आते हैं, इससे कनेक्ट करके सेंसर के लिए लग जाएगा। देखिए, ये पंप है, इंसुलिन इंजेक्शन का काम करेगा, इंजेक्टिंग बेसिस, और ये सेंसर है, तो ये आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल्स भी प्रेडिक्ट करेगा और इससे 24/7 वाया ब्लूटूथ कनेक्ट रहेगा। बोलते हैं क्लोज लूप वाया ब्लूटूथ। यस, दिस इज नोन एज द वेरी परफेक्ट क्लोज लूप। पंप का नाम है ऑटोमेटिक हाइब्रिड क्लोज लूप। अब तो कह रहे हैं कि एआई भी यूज करने वाले हैं, तो प्रोग्राम बेस्ड। इट इज अ प्रोग्राम बेस्ड ओनली। अभी भी है। या इट इज अ एआईडी, ऑटोमेटेड इंसुलिन डिलीवरी। ये अभी भी है। ये बेसिक पंप है। आई हैव शोन यू द दिस इज द बेसिक पंप। ये दोनों ओवरऑल एक ही डिवाइस है।
दिखने में कम पैसे हैं, बट ये 780G है, एल्गोरिथम बेस्ड है। सी दिस इज द एल्गोरिथम, स्मार्ट गार्ड नोन एज द एल्गोरिथम। These are the settings. We can go for we can set the targets 100, 110, 120. Here you can see auto corrections are there. Auto correction means correction doses will be given automatically by the pump. अपनी भाषा में कहा जाए, सुना जाए, कहने वाले के लिए भी सरल और सुनने वाले के लिए भी सरल। कुछ लिखता भी हूं, वह क्लिनिकली रेलेवेंट केसेस के रूप में, जिसमें हमें क्लिनिक में क्या करना है वही बातों की चर्चा होती है, और सुनाता भी हूं अपने इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से सरल और सहज हिंदी भाषा में। मैं आपको कई बार ऑनलाइन माध्यम से सुन चुका हूं और आपके बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं। सर एक्चुअली मेटफॉर्मिन पे आपने बताया, तो इसमें वर्चुअल मतलब कौन सा स्टार्टिंग डोज हमें लेना चाहिए एक पेशेंट में जो 15 मेटफॉर्मिन हमेशा सस्टेन Anybody who has left, who had not got this answer sheets? Question paper देख लें एक बार। Question paper है ही। Everybody has answer sheet. Go ahead. The first option is start prednisolone 40 milligram per day. Second is begin with petroxyphyllin 400 milligram TID. Third is perform Lilly score at day 7 before deciding the therapy. And the fourth is give IV and acetylcysteine. Repeat liver function test in 3 months. Parameters considered most important for diagnosis sarcopenia. Options are low muscle mass, low muscle strength, low gait speed, last low body weight. Question 17. A 30-year-old man present with recurrent gross hematuria following upper respiratory tract infection. I want really to tell here in this convention center that when I was reading the ancient medical sciences and the ancient system of medical sciences in this country, there were also conferences were recorded, and this thing which is recorded in a book of Indian Science and Technology by Dharampal, who is a Gandhian who has written, and this book and this paper was written about the ancient medical system and compiled by the Britishers who have compiled and have seen all the systems, including the education and the medical system in the country. So that paper illustrates that actually the most of the medical sciences or the medical treatments were done by saints who goes from village to village
And in the 4 months when the diseases are more, which is known as Chaumasa, so they used to visit every village of the country. And then they treat all the people, and then they learn what kind of diseases has come, what kind of things, and then they would have a conference at Ganga Sagar. Now to see about the next award is the